हेलो गाइस, मैं हूं आपका अपना सैमी और सैमी द ढाबा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है चिली गार्लिक पास्ता की, जिसमें ना ही आपको टमाटर की आवश्यकता है ना ही प्याज की। घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स से आप इसको कभी भी बना सकते हैं। ये काफ़ी इंस्टेंट और काफ़ी ईजी रेसिपी है। तो चलो रेसिपी को देखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लेंगे और उसको एकदम बारीक बारीक चॉप। और जैसे ही थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाता है हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो उबले हुए पास्ता हैं उसे। इसी प्रकार से धीरे धीरे इसको चलाते रहना है और आपको जो गैस की आंच है, फ्लेम है, उसको थोड़ा लो ही रखना है ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं। तो इसी प्रकार इसको धीरे से चलाते चलाते इसको 4 से 5 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है हमारे पास्ता पे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और कितना प्यारा कलर आ चुका है इसका, आप देख ही सकते हैं। For more video and update, please subscribe, like and share my channel.